अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आज हम बनाने वाले हैं चिकन मखलूबा एंड दिस इज़ द इंग्रेडिएंट लिस्ट। जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड वील क्विकली गेट स्टार्टेड। जैसा कि आप देख रहे हैं, वी आर गोइंग टू मेक दिस इन द इंस्टेंट पॉट। मैंने ऑलरेडी ऑन कर दिया है एंड आई हैव केप्ट इट ऑन द सॉटे मोड। इट इज़ नाउ प्री हीटिंग और मैंने ऑलरेडी यहाँ पे अराउंड 3/4 कप ऑफ ऑयल ऐड कर दिया है एंड अबाउट 3 लार्ज साइज पोटैटोज़। तो इन पोटैटोज़ को मैंने 4 पीसेस ईच में कट किया है। डोंट मेक इट टू स्मॉल बिकॉज इन द प्रोसेस ऑफ फ्राइंग एंड देन ये वापस राइस में भी कुक होंगे, देन इट विल टर्न टू मशी एंड ये राइस में मिक्स हो जाएगा कम्प्लीटली। सो वी लेट इट फ्राई फॉर अबाउट फ्यू मोर मिनट्स अंटिल इट टर्न्स गोल्डन ब्राउन कलर। इट्स ऑलमोस्ट डन, तो अभी हम लोग इसे निकाल लेते हैं एंड वील टॉस इन आवर कॉलीफ्लावर। देयर गोज़ आवर कॉलीफ्लावर। तो गोभी को मैंने अराउंड 10 मिनट्स सोक किया था हॉट वाटर में अलॉन्ग विद सम सॉल्ट। आपके जो फ्लोरेट्स हैं आपको मीडियम टू लार्ज साइज़ में रखने पड़ेंगे द पीसेस, क्योंकि अगेन आफ्टर फ्राइंग इट विल गो इनटू द राइस टू गेट कुक्ड। तो वी डोंट वांट इट टू डिसअपियर जब हम राइस ओपन करेंगे, राइट। वी वांट इट टू रीटेन इट्स शेप। तो हम लोग इसको फ्राई करेंगे फॉर सम टाइम अंटिल इट टर्न्स स्लाइट ब्राउनिश इन कलर। गोल्डन ब्राउन चाहिए हमको, या इवन इफ इट्स हल्का सा अगर ब्राउन हो रहा है तो वी कैन रिमूव इट ऑफ। इट्स जस्ट फॉर एन एडेड फ्लेवर। तो यहाँ आप देख सकते हैं इट्स स्टार्ट टू गेट इट्स कलर। वील टॉस इट इन फ्यू मोर मिनट्स एंड देन रिमूव इट। तो ये हल्का सा ब्राउन हो चुका है, तो हम लोग इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में। Isn't that color looking lovely? We'll move forward. At this point, I've added in some whole spices like bay leaf, cinnamon, cardamom, and we'll toss in about 2 large-sized, one large-sized onion. I've used 1 large-sized onion. That should do. So we'll just fry it until it turns translucent, pink and soft. Remember, we don't want it turned brown. We want it soft, pink, translucent. That's it. अभी बिकॉज आई लाइक अ स्पाइसी टच, तो मैं इसमें थोड़ा सा ग्रीन चिलीज ऐड कर रही हूँ। अबाउट 45 विल डू। इफ़ यू डू नॉट लाइक समथिंग स्पाइसी, द स्पाइसी फ्लेवर ऑफ द चिलीज, then you can just completely omit it. This step is completely optional. At this point, I've also added in 1 tablespoon of ginger garlic paste, which I've skipped recording, but you can add it for a nice touch and flavor. The indicator shows hot. There's nothing to worry about. It's absolutely fine. At this step, we're adding in about 2 large sized tomatoes.
We'll give it a nice stir until it turns soft and it's cooked. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं we've already done 8 minutes of cooking so far, 22 minutes more remaining for the saute mode to get off, because ये default होता है तो it's set to 30 by default. हम इसको change नहीं कर सकते, but you can always press the saute mode again to start the 30-minute cycle again. तो अभी हम लोग around 1 kg chicken add कर रहे हैं. Fry it a little bit, saute it along with the onions and tomatoes so that it takes on that flavor and it remains juicy. I'm adding in about 1 teaspoon of turmeric and 6 to 7 teaspoons of salt. Use an equal amount of salt to rice ratio, as in if I'm using 1 cup of rice, I add in 1 teaspoon of salt, and that perfectly works fine for me. But I've added in about 2 more teaspoons of salt because हमने potato and chicken वगैरह यूज़ किया है, so it'll balance it out. आप anyways check कर सकते हैं just before adding it. We'll stir the chicken in for some time, and हम लोग अभी 6 cups of rice add कर रहे हैं. So just stir this rice in along with the juices so that वो उसका जो spices का flavor है, chicken का flavor है, वो अच्छे से absorb कर लें. I've added in equal amount of water. जो rice and water ratio है, you can keep it 1:1 because मुझे इतना soggy rice पसंद नहीं है. If you want the rice to be really soft and sticky, तो आप 2 cups of water for 1 cup of rice इस ratio में use कर सकते हैं. So now we'll add in the stir fried vegetables and give it a nice mix. We'll now turn off the saute mode. हमको cancel button press करना पड़ेगा and it's done. तो अभी we'll close the lid and start the cooking process. तो lid को close कर दीजिएगा. Make sure it is on sealing position. And we'll turn the rice function on. इसको अभी हम लोग pressure high पे रखेंगे and we'll set it to 24 minutes. तो मेरा timing works perfectly fine for me and cooks the rice perfectly. So I use 4 minutes for 1 cup of rice, so which means 24 minutes for 6 cups of rice. तो अभी आप देख रहे हैं preheating is done, it's cooking, 24 minutes remaining, so we'll wait. Feeling extremely hungry. The cooking process was done 16 minutes back. It was in the keep warm mode for 16 minutes. I let it cool on its own and अभी हम लोग manually इसको pressure को release करेंगे. We'll wait for all the pressure to get off. ये जो red color valve आप देख रहे हैं is a vent जहाँ से because of the internal pressure it's risen above. तो अभी it'll just जैसे ही pressure settle होता है it'll go down. ये देखें it's gone down
तो अभी इट्स सेफ टू ओपन, तो हम लोग लिड अभी ओपन कर देते हैं। एंड देयर यू गो, हमारा चिकन मखलूबा बनकर तैयार है। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस रिज़ल्ट ऑनेस्टली। जो आलू है एंड गोभी है, इट्स कम आउट सो परफेक्टली। आई मीन इट हैज़ रीटेन इट्स शेप। द चिकन ऑल्सो लुक्स टेंडर एंड जूसी, बहुत अच्छा था। एंड द राइस इज़ ऑल्सो कुक्ड परफेक्टली एंड ऑयल भी सही से है, इतना ज़्यादा नहीं हुआ है ना कम हुआ है, इट्स परफेक्ट। So let me plate it and eat it. I'm feeling really hungry. I hope you enjoyed watching this video as much as I loved cooking it. Please like this video, subscribe to my channel and share it with your friends and family. Also जो notification bell का icon दिख रहा है उसको press कर दीजिएगा so that whenever I come out with a new video you get notified. Try this video, let me know in the comments below, and I'll see you in the next video.